So in today's session, we are going to start with the concept of test classes. So even yesterday, we have had a discussion about this. Now, as a part of, as a developer, as a Salesforce developer, now see, it's our responsibility to develop the complicated business logics, right? Now, whenever we develop something, how could we actually write down, how could we create some of the business logic? There are so many different ways. Like you could create a class, you could create triggers. You could with the asynchronous programming, what we have learned, like so we could create a batch class, a scheduled class, right? We could create the queuable interfaces and all that. Then after this, we are going to learn about the Visual Force programmings also. So we will be understanding like how to create a Visual Force page, and every Visual Force page, whenever we are creating to have the business logic, we write down the VF controllers also. There is also a part of Apex that we used to write down in the controller classes. And then we will be learning, after everything, we will in the integration, when we are going to start, we will be learning the part of web services and how to write down the web service and APIs and everything. So the kind of business logic, the kind of functionality what we used to develop, generally we used to follow all these tools. Generally we used to make a use of all these tools so that we could develop the functionalities, right? Now, whenever we develop something, whenever we develop something, it's our responsibility to perform the unit testing also. As a Salesforce developer, as a Salesforce developer, it's our responsibility that we should perform this testing, that whether we should make a dry run of everything, and that we should check out if the kind of functionality what we have developed is actually it's working fine or not. So we need to also create the use cases, the kind of some of the use cases, so that we could, with the help of that test data, we could perform the testing, whether our class, whether our trigger, whether the batch classes and everything, whatever we have created, if we have written any sort of web services, if we have written any sort of controller class, to whether that particular business logic, is it working fine or not. So this is in the Salesforce, in the Salesforce, the developer is the first person who is going to perform the testing. There are also software tester, but they are onto the secondary stage. On the primary stage, we are the responsible person that who will develop and who will also test. So this is our responsibility as a Salesforce developer. This is our responsibility to even perform, to write the code and then even perform the unit testing also. So how will we write down that unit testing? How will we perform that unit testing? We actually require to write down certain scripts, certain automated scripts. Now, with the help of that automated scripts, we will be, we will performing the test, unit testing of all these business logic. It would be Apex class and the triggers and everything. Now, that kind of script, what we are going to write down is called as your test classes. This is something called as test classes. And then yesterday also I told you one thing, whenever we are, when we are developing something, this we require to move it to the production, because we always develop, whatever we do it onto the sandbox. Whenever we develop something, we usually develop it onto what? Sandboxes. And see, sandboxes itself have so many different types. I tell you one thing. If see, there are so many different types of sandbox. Like there is like a developer sandbox, developer devents, and this could dev pro sandbox, both developer sandbox and then developer pro sandbox. And then it could be like, partial copy sandbox and then full copy sandbox. There could be different types of sandboxes are. So it all depends on the organization to organization also. You will be learning during the deployment. I will be, I'll be telling you, okay, how what are the different types of sandboxes and how does this code actually moves to, So it's like, it all started with Dev Pro sandbox. The first is Dev Pro. The first one is actually Dev Pro. Okay, the first one is Dev Pro sandbox. From Dev Pro sandbox, you could move it to, or could be developer sandbox. The first one could be developer sandbox. The second, usually developer sandbox is not used, Dev Pro sandbox is used. And then after it could be partial copy, and then it could be full copy, full copy sandbox. Now, once all these stages has been crossed, once this all stages has been crossed, from the full copy sandbox, the code is actually being moved. What is you have developed? It's actually being moved into the production from full copy sandbox. And this you will be learning this whole thing in the deployment. जब हम deployment पढ़ेंगे, तो you will be learning what are the different stages of sandboxes. What is the feature of every sandbox? What is the feature of every sandbox, and then how actually we could move the code from the sandbox to the production.
Now here I wanted you to understand one thing. Here I wanted every one of you to understand something. See, whenever we are moving code from sandbox to sandbox, it could be like I have developed something on the developer sandbox and I'm moving it to developer pro sandbox. If either I'm moving something from developer pro to the partial copy, or I'm making something from partial copy to full copy sandbox, whenever we are moving any code, whenever we are moving any business logic, whenever we are moving any business logic from sandbox to sandbox, we don't require to have the code coverage. That time we don't require it. I mean, if you have created a class, you have created a trigger, or you have written some of the batch classes, schedule classes, VF controllers, or whatever you have written. If you are moving it from a sandbox to sandbox, for example, you were being developing something onto the developer sandbox. Developer pro is for your leads. Now he will ask you that have you completed your module? You will be saying yes, I have completed. Then he will ask you to deploy it. He will ask you to deploy it from your sandbox to his sandbox. Then he will be evaluating. After developer pro sandbox, let's say it's moving on to the line manager, for the partial copy. From line manager, it's actually be moving to a module lead or somebody like this, like that person. So whenever we are actually moving a code and whenever we are moving a business logic from sandbox to sandbox, that time we don't require to have the code coverage. If even you have not written the test classes, it's perfectly fine. It's perfectly fine when you are moving a code from sandbox to sandbox. Actually, this is something which is required when you are moving it from the sandbox to the production. When you are moving your business logic, when you are moving your class, trigger, batch classes, whatever, when you are moving it, when you are deploying it from your the last stage, the full copy sandbox, and then when you are actually moving it from the final stage of sandbox to the production, that time it requires a code coverage. And this is, internally Salesforce server will cross verify that whether you have supplied that much of the quality code or not. So this is something you must know. This is something you must know. Okay, when we are actually moving, when we are moving code, when we are moving a code from sandbox to sandbox, actually that time we don't require to have the code coverage. But actually the code coverage is required when the code, when the code, or rather say when the business logic, whatever, because code could consist of, the business logic consists of all these stages and all these things. So when you are actually making your code to be get transferred, the business logic to be get transferred from the final stage of sandbox to the production, that time the code coverage is required. तो हम लोग what we usually do कि हम लोग इतना सारा इंतजार थोड़ी ना करते हैं. So as a Salesforce developer, as a Salesforce developer, if we develop a class, if we create a trigger, if we write down a batch class, then this is our responsibility at the same time to write down the test classes for all these things. So whenever in the real time, if I create a class, I will also write down the test classes for that. Nobody is going to tell me, but it's my own responsibility. Nobody will tell you, ki, chalo, you created a class, now you need to write down. No, it's something that we consider that this is something you must have a knowledge of this, and this is something that doesn't require you to be get acknowledged. Okay, you need to write down the test classes. No. Why? Because this is something a common practice everywhere in every organization. This is a very common practice with all Salesforce developers, that if you create a business logic, you are the person that who is responsible to write down the test classes also. And that is why we must learn the test classes. See, usually nobody touches this. I'm telling you this. I have seen so many different modules, so many different, Salesforce training courses, their curriculums and everything. Nobody usually touches the test classes. Nobody. And they even don't tell you that there is something you must aware of. Why? Because if you make it aware, you will ask them, ki chalo humko sikhao abhi. They will up to the development, they will completely skip this part from the development, and they will say, no, this is something we usually don't do. This is a part of software tester, and because you are novice, you don't know everything, you don't know anything about the technology, you will be start thinking we never used to write down the test classes and everything. It is not our responsibility. This is a responsibility of a separate department. Nahi. Those people, those who call themselves as a software tester, they are not responsible to perform unit testing. They are actually doing some sort of a different set of testing, जिसमें rigorous आता है, white box आता है, black box आता है, functional testing आती है. They will be actually mostly they are performing functional testing. Whatever you have developed is actually being matches from the requirement or not. They will be testing. उनका testing broad level पे रहता है. Unit testing जमीन पे होता है.
यूनिट टेस्टिंग जमीन पे होता है, ग्राउंड पे होता है, एंड हु विल गोइंग टू डू दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. So remember this thing, always remember this thing. Whenever in the company you are writing a class, you are writing a trigger, you are writing any kind of business logic, you also, once you complete it, you are also responsible to write down the test classes. You are also write down the test classes. So whenever if someone asks you the estimation, tell me if you wanted to develop this business logic, how much time you require? They will ask you. Sometimes it asks you, sometimes the people used to ask your lead or probably somebody who's allotting you the task, they can ask you, what is the probable duration? What is the probable duration that you can tell me how much time you require? So whenever you are giving an estimation to somebody, divide it into two things. First thing, development, and the second thing, testing. See, you need to tell them, see, I'm the person who is going to develop this logic. Development requires, for example, 20 days. I at least require 20 working days. That means from Monday to Friday. That means one whole month for 20 days. And then again 10 days I will be requiring to write down the test classes and everything. That means approximately 30 days I will be requiring. This is my requirement. So whenever you are giving estimation of time to somebody, whenever you are giving the estimation of time to somebody, you actually require to include two things in that: development along with writing the time duration to write down the test classes and everything, because it's our responsibility. It's our responsibility. You are the person that who have developed this. And so you know the logic. What is the purpose of this class? What is the purpose of this trigger? What is the purpose of this batch class? So you know this. And that's the reason you need to write down what? You need to write down the test classes. Generally, nobody actually touches this. I have seen so many videos. Literally, when I was started, when I started searching for the Salesforce training, when I wanted to get into this, you won't believe I have at least taken 20 to 30 demos, literally. And then I have compared their curriculums, because so many people knows me from this batch. I was into education sector. I was very good in research. So I have compared their curriculums and everything. And then whomsoever I found it bad, हैदराबाद में जो कैपिटल इन्फो है, उनका मेरे को ठीक लगा. And then I heard about the trainer Firoz. So and then finally I decided कि इनके पास लगाता हूँ. But see, ये होता है कि it happens with everybody. Even though trainers are very good, they don't have that much of the time, because they also have been pressurized with the management that you need to finish this, within up to this month, because we have another batch that is outstanding and you need to take it. So sometimes because of the business policies also, even the good trainers also, can take everything. So that happens, but that is only 10%. 90% of the things was very good. बाकी का फिर अपन धीरे धीरे अपने काम करते करते वी स्टार्ट एडिंग दिस, हम कर लेते हैं. वो होता है, वो सभी के साथ होता है. एनीवेज, सो सी, so when we are moving a code from sandbox to sandbox, when we are moving the code, now you come to know that there is not only one sandbox, there are at least 3 to 4 different types of sandboxes. हमारी कंपनी में usually there are only 2 sandboxes. हम लोग सिर्फ 2 ही यूज करते हैं. We only use developer pro and then see the full copy. ये बीच का हटा ही देते हैं हम लोग सारे पार्शल कॉपी और उसके पहले की स्टेज. वी यूजुअली अवॉइड दिस. तो हम लोग वो, एंड डिपेंड्स इट डिपेंड्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. अभी सचिन का पर्सी है. पर्सी में एटलीस्ट 4 से 5 स्टेजेस है सैंड बॉक्सेस की. देयर आर 4. इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच योर टीम साइज इज, हाउ मेनी डिफरेंट पीपल्स आर वर्किंग. तो दे दीज गाइज यूज्ड टू मेंटेन द एवरी वो पूरा रीति रिवाज से उन लोग काम करते हैं. वी यूज टू परफॉर्म इट इन द शॉर्टकट. हम लोग सीधा डेवलपर फ्लो पे काम करते हैं, मेक इट अवेलेबल टू फुल कॉपी से सीधा लेके जाते हैं उसको प्रोडक्शन पे. तो हमारे थोड़ा सा शॉर्टकट चलता है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ द मैन पावर, है ना. तो हम लोग यूजुअली ये करते हैं. बट सी, होता तो जनरली ये सही तरीका है कि द डेवलपर्स ऑल्सो ऑलवेज वर्क ऑन द डेवलपर, देन देयर हेड्स, जैसे कि जो लीड होता है या फिर मॉड्यूल लीड होता है ना, दे यूज डेवलपर प्रो. उसके बाद में जो और आगे की जो लोग हैं, दे विल यूज पार्शियल कॉपी. और होता है फिर फुल कॉपी इज जस्ट लाइक रेप्लिका ऑफ प्रोडक्शन जैसा दिखता है, फुल कॉपी वैसा ही दिखता है. एंड एवरी फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन, द सेम फीचर्स आर देयर इनटू द फुल कॉपी ऑल्सो. तो ये सब मैं बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी. एंड देन फ्रॉम द फुल कॉपी इट्स एक्चुअली बीइंग माइग्रेटेड टू प्रोडक्शन. So when you are actually transferring, your code, your logic from sandbox to sandbox, that time we certainly don't require to have one coverage. Coverage कब लगता है अपने को? जब we are moving it from sandbox to production at the final stage. Now, how much coverage we require? We already have, yesterday also we have discussed. If you create a class, any kind of class, could be Apex, Batch, Schedulable, VF controller classes, web services classes. These all are the classes, these all are the classes.
So whenever you create a class, it could be your simple Apex logic class. It could be asynchronous programming with the batch class and the scheduled class. It could be your VF page controller classes, web services classes, API classes. Classes should maximum have 75% of the quality code. Without that, you cannot deploy it. Without that, you cannot deploy it. And if you're writing a trigger, trigger should minimum have 1% of the quality code. Let me show you something. We also have developed so many classes. And if I go and go and build and this Apex classes, develop. So we have developed, see, we actually have created so many different classes, right? HR, hiring manager, and then HR helper, QAble, some of them were actually your standard classes, but I created a few of the classes. Right? Now, for example, if I have created a class DML utility, something like that, let me go with that DML utility. Now I created this class. There are so many different methods over here, right? There are so many different methods over here. With this class. If I wanted to deploy this class, I need to have at least 75% of code coverage. What is my present code coverage? 0%. Because I haven't written any test cases for this. And so the code coverage is 0%. That means this class cannot be deployed. Although it's working absolutely fine. There is no bug in this class. Whatever the business logic you have been implemented, that all business logic is working fine. Every method inside the class is working fine, but you cannot deploy. Why? Because you don't have that much of the code coverage. And see, this is why we must write down the test classes. It's not just with the class. Let me try to show you with the triggers also. If you have created the triggers, we created the triggers like account trigger, hiring manager trigger, lead trigger. If I wanted to deploy this, I must have at least 1% of code coverage. Right now, I'm having only 1%, 0%. I cannot deploy this trigger. So there comes, now it's clear to everybody. Now it's clear to every one of you. Writing just code is not our responsibility. We are also responsible to perform the testing. And that's why whenever someone asks you how much time you will be required to develop this thing, divide your time in two slabs. The first is for the development. The second is for writing the test cases and writing the test classes, providing the appropriate test coverage. So you need to, divide your time for the development and for the testing. ये है, this is how. तो ये सब धीरे धीरे समझ जाओ कि अभी आप as per topic. अब आप now you yourself compare. जब आप आए थे यहाँ पे and when you were new to the admin, तब आप क्या थे? You learn the admin के आखिरी दिन पे आपने काफी कुछ सीखा. Then you started the development. तब आपका स्टेज क्या था? आज आप देखो आप. तो कैसे है ना, gradually everybody learns. Gradually everyone learns and everyone makes an improvement. होता है सब धीरे धीरे सबके साथ होता है ये सब. ठीक है. Now you know so many different things. अभी आपको काफी कुछ पता है. And even though people have started, taking the interviews in the development, development questions in the interviews also. Because मैंने कहा था कि as soon as I finish the trigger, you could start taking the calls from development also. Because हो गया. Development में what could they ask? They could ask you about Apex, SQL part. They could ask you about the collections and everything that also happened there. They could ask you about, this batch programming. Asynchronous batch programming was the most important. And they could ask you about the triggers that also we have completed, right? Then there are a few more topics like VF, Visual Force बचा है आपका, Visual Force बचा है, टेस्ट क्लासेस बची जो मैं अभी स्टार्ट किया है, ठीक है. नाउ दिस इज पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट. उसके बाद में इंटीग्रेशन शुरू करूंगा, इंटीग्रेशन के बाद डिप्लॉयमेंट, एंड देन वी विल बी फिनिशिंग दिस होल कोर्स. So right now you are in a state that where you could take, you could write down in your resume, make the modifications on your resume that I am a Salesforce certified developer, and then start taking the call of development also. Okay, chaliye. So whenever we are deploying a code, we should at least maintain 75% for the classes and 1% for what? 1% for the triggers. Okay. Now, what are those components of the business logic that needs to be write down the test classes? First of all, for the classes, you need to write down every class you created. You need to write down a test class. For the triggers, for the batch classes, for the schedule classes, for the VF controller, and for the web services. Now, whatever the things you have developed, for the things what you have developed with the configuration features. Configuration features matlab things what we have developed with the non-coding environment. नॉन कोडिंग से आपने जो भी बना रखा है, जैसे यू क्रिएटेड वेब वर्क फ्लोज, you created certain business logic with the process builder, and you have certain validation rules, formula fields,
दैट डजंट रिक्वायर यू टू राइट डाउन द टेस्ट क्लासेस, दैट डजंट रिक्वायर, और वही तो बेनिफिट है उसका। देखो, कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू दैट फॉर दिस पर्टिकुलर लॉजिक ऑल्दो गो विद द प्रोग्राम जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, बट इफ दिस इज योर रियल टाइम यूज केस, once if this is your real time use case when you just require to copy records from one object to another object, and that to be there if they are related, then you certainly don't require to write the trigger for this. Try to do this with the process builder. Why process builder? Because if you constructed the same business logic with the process builder, you certainly don't require to write down the test classes and everything. It could directly deploy. This functionality could directly be deployed. But for this, if you write down the trigger, you also first of all write down the handler classes, then write down the test classes for that. है ना? So ये होता है डेवलपमेंट में एफर्ट बढ़ जाता है, डेवलपमेंट में ना योर एफर्ट्स बढ़ जाता है, और वही चीज अगर आप नॉन कोडिंग से करते हो डेवलपमेंट फास्ट होता है। तो दैट्स द रीजन सेल्सफोर्स इटसेल्फ रेकमेंड यू कि अगर कोई चीज नॉन कोडिंग से हो सकती तो करो, डोंट राइट कोड फॉर एवरीथिंग, वेयर एवर इट इज नेसेसरी देन ओनली राइट डाउन, अदरवाइज जस्ट स्किप दैट। ठीक है, चलो। तो हाँ, नाउ हाउ टू बिफोर मूविंग द कोड, अभी जैसे मैं आपको दिखा ही रहा था कि बिफोर मूविंग द कोड वी हैव टू एस्टिमेट द ऑर्गेनाइजेशन कोड आल्सो, दैट हाउ कुड वी डू दैट। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी क्लासेस है, मतलब दैट कुड आल्सो बी, अगर मुझे सारी क्लासेस डिप्लॉय करनी है, वैसे जनरली होता नहीं है, बट इफ आई मीन अभी जैसे यहाँ पे इफ आई हैव ऑल दीज क्लासेस आर देयर एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि मेरे को सारी क्लासेस डिप्लॉय करनी है, ये सारी की सारी, ठीक है, अटैच डेमो एंड एवरीथिंग, तो फिर आई नीड टू आई नीड टू एस्टिमेट द ऑर्गेनाइजेशन कोड कवरेज। ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जितनी भी क्लासेस हैं सबका सबका कोड कवरेज कितना आ रहा है। तो करंट कोड कवरेज इज 0%। ठीक है, बिकॉज वी हैवंट रिटन एनी टेस्ट क्लासेस। तो ये भी देखते हैं कभी, अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो इंडिविजुअली, जैसे एक एक क्लास का देखते हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हाउ यू कुड फाइंड इंडिविजुअल फॉर एवरी क्लास। आप क्लास को ओपन करो एंड देन सी द कोड कवरेज, कितना कोड कवरेज आ रहा है। आप ट्रिगर को ओपन करो एंड सी द कोड कवरेज। तो दिस इज द इंडिविजुअल वे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ये तरीका है। इंडिविजुअल लॉजिक जो है एक क्लास का, ये एक ट्रिगर का, दैट यू कुड सी इट, दैट यू कुड सी इट पर्सनली, दैट यू कुड सी इट पर्सनली लाइक दिस। ठीक है, ऐसा। हम्म और एक तरीका है इसका, ये ज्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, और एक तरीका है डेवलपर कंसोल से। सो डेवलपर कंसोल से कैसा होता है? एक सेकंड यार, गले में कुछ फंस गया है। ठीक है, और एक तरीका देखो, मतलब ये कैसा है कि दिस, अगर आपको यहाँ पे ना मेरे को इंडिविजुअल एक एक क्लास का देखना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल आई ओपन दिस क्लास, आई नीड टू सी द कोड कवरेज, देन आई गो टू दिस क्लास, आई नीड टू सी दिस कोड कवरेज। तो ऐसा ना देखते हुए द बेटर वे इज लाइक गो टू द डेवलपर कंसोल, एंड डेवलपर कंसोल पे जाने के बाद में, ठीक है, डेवलपर कंसोल पे जाने के बाद में यू हैव अ टैब कॉल्ड एज टेस्ट, यू हैव अ टैब कॉल्ड एज टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यू विल बी सीइंग, यहाँ पे सी यू विल बी सीइंग जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, जितने भी आपके ट्रिगर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी लिस्टेड आउट ओवर हियर। यहाँ ट्रिगर भी दिखता है आपको, एट द सेम टाइम यू कैन सी द क्लासेस, यहाँ दोनों दिखता है। ठीक है, एंड देन ओवरऑल कोड कवरेज, हाउ मेनी लाइंस दे हैव, हाउ मेनी लाइंस, लाइक अकाउंट ट्रिगर हैव 4 लाइंस, हाउ मेनी हैव बीन कवर्ड, नो, कोई लाइन कवर नहीं हुई, दैट्स व्हाई 0 out of 4। Account trigger handler is one of the class. This is a trigger, but this is a class. This is a handler class. It's having 14 line. कोड कवरेज कितना है? 0%। तो ये सही जगह होती है एक्चुअली, जहां पर आपको एक ही बार में, मतलब इंडिविजुअली एक एक को ओपन करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज इफ यू गो टू द यूजर इंटरफेस हियर, यू इंडिविजुअली रिक्वायर टू गो एंड ओपन द क्लास एंड देन सी द कोड कवरेज। But here at the same, in the one place itself, you could see the list of all the classes and all the triggers that you created, and then their respective code coverage. तो ये ज्यादा सही तरीका होता है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट, दिस वाज ऑल अबाउट राइट, दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी। हाँ, एक आखिरी और चीज, फॉर एग्जांपल yesterday I told you one thing, see the usual naming convention जो होते हैं, यूजुअल नेमिंग कन्वेंशन कैसे होते हैं कि देयर इज अ क्लास कॉल्ड एज अकाउंट हेल्पर,
उसकी टेस्ट क्लास का नाम आप अकाउंट हेल्पर तो लिखो ही, साथ में आखिरी में टेस्ट लिखो, अंडरस्कोर टेस्ट लिखो, या टेस्ट को पहले लिख दो, ठीक है। आई यूजुअली फॉलो दिस, मैं जब भी बनाता हूँ टेस्ट क्लासेस तो यूजुअली मैं इस तरह से बनाता हूँ कि टेस्ट नाम का वर्ड पहले देता हूँ और बाद में वो पर्टिकुलर क्लास देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा तरीका यूजुअली कैसा है कि इफ फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन अ ट्रिगर, इफ आई हैव रिटन अ ट्रिगर फॉर एग्जांपल अकाउंट ट्रिगर, ठीक है, दिस विल माय ट्रिगर नेम, ठीक है, दिस विल माय ट्रिगर नेम। उसकी क्लास का नाम क्या रहेगा, उसकी क्लास का नाम रखता हूं मैं अकाउंट ट्रिगर हैंडलर, या फिर हैंडलर अकाउंट ट्रिगर। और उसी की टेस्ट क्लास का नाम रखता हूं मैं टेस्ट अकाउंट ट्रिगर हैंड। तो दिस इज माय कन्वेंशन, यू कुड फॉलो एनीथिंग फ्रॉम हियर। ये यूजुअली मैं ऐसा करता हूँ। तो जनरली इस तरह से मैं ट्रिगर ऐसा लिखता हूँ, उसकी हेल्पर क्लास ऐसा लिखता, हैंडलर क्लास ऐसा लिखता हूँ, एंड देन उसकी टेस्ट क्लास ऐसा लिखता हूँ। तो इसको अगर आप ऐसा चाहें तो ऐसा भी कर सकते हो। तो आखिरी में टेस्ट दे दो, तो आपको जब आप इसको लिस्टिंग में देखते हो तो ये तीनों इकट्ठे एक जगह दिख जाएगा, क्योंकि अकाउंट अकाउंट से शुरू होगा, तो ये दिस वुड बी बेटर, है ना, इस तरह से भी देखा तो भी चलता है। तो आपको ये तीनों तीनों क्लासेस अगर आप लिस्टिंग पे देखते हो तो आपको एक साथ दिखेगी। जैसे अगर आप वीएस कोड पे देख रहे हो उसको, है ना, या फिर आप वीएस कोड पे, जहाँ वीएस कोड पे कैसा होता है कि इट विल सॉर्ट इट आउट फ्रॉम ए टू जेड। जैसे अभी ए चल रहा है तो पूरा, तो यहीं पर सब नजर आ जाएगा, अकाउंट ट्रिगर, ठीक है, अकाउंट की क्लास जो भी है तो वो पूरा यहीं पे नजर आ जाएगा, एक ही लिस्ट में वन बाय वन नजर आ जाएगा। तो वो भी एक बेनिफिट होता है, मतलब नेमिंग कन्वेंशन का। तो चलो ये वाला फॉलो करेंगे अपन, ठीक है। चलो उसके बाद में और कुछ बच रहा है क्या? टेस्ट क्लासेस जब भी लिखते हैं तो टेस्ट क्लासेस आर ऑलवेज रिटर्न, देयर इज एन एनोटेशन फॉर दैट, एंड दैट एनोटेशन मतलब व्हेनेवर वी राइट अ क्लास तो उसके पहले हमको कुछ लिखना पड़ता है, @is test, है ना। जितनी भी हमने टेस्ट क्लासेस लिखी हैं, जितनी भी हमने टेस्ट क्लास, कल भी मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन द टेस्ट क्लासेस फॉर द अकाउंट हैंडलर। तो कोई भी टेस्ट क्लासेस की शुरुआत में आपको @is test लिखना पड़ता है। दिस एक्चुअली शोज द अपेक्स कंपाइलर कि दिस क्लास इज अ टेस्ट क्लास, दिस क्लास एक्चुअली इज अ टेस्ट क्लास, ठीक है, दिस क्लास इज अ टेस्ट क्लास। तो whenever you write down any test class in the beginning of itself, in the beginning of the class as a first line, you need to use of one annotation, and that is at @is test। जैसे हम लोग @future method यूज करते थे ना, इन द सेम वे @is test। तो दिस इंडिकेट दिस क्लास इज अ टेस्ट क्लास। और एक बात के 1 सेकेंड, ओके, सो ठीक है। तो we actually whenever we started writing a test class should always be annotated with @is test, ठीक है, @is test। हाँ, तो एक बात और जो मैं बताने वाला था आपको, there are few of the certain rules over here, prepare the test method and which will invoke automatically, ठीक है। तो whenever we in the test class, whenever we write down any of the method inside the test class, if I am writing any of the method, that method must be static and void, because every static and void method are actually called by itself। ये मैंने अगर method बनाई, set up the test data, if this is my name of method, now this method must be a static method and a void method। Why static and void? First of all, it doesn't returns anything, to the calling environment, so it's void। It doesn't returns anything to the calling environment, so the return type is void। Moreover, it should be a static method। Why? Because we wanted this should be to be get invoked automatically, we wanted this method to be get invoked automatically। So every method, ये तो क्लास लेवल पे बात होगी ना, क्लास इज @is test। अब क्लास के अंदर मेंबर्स भी तो क्रिएट होते हैं, क्लास के अंदर आपके मेंबर्स भी तो क्रिएट होते हैं, राइट, क्लास के अंदर आपके मेंबर्स भी क्रिएट होते हैं। तो मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं, जैसे आप जब मेथड बनाते हो, दैट मेथड, एनी नेम ऑफ द मेथड, द नेम ऑफ द मेथड शुड बी व्हाट, इट मस्ट बी स्टैटिक मेथड, एंड देन इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी अ वॉइड मेथड, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू मेंटेन, दिस इज समथिंग व्हाट वी नीड टू मेंटेन। चलिए, उसके बाद में एक चीज और है, आखिरी वाली, कि व्हेन द गवर्नर लिमिट्स को अगर हम कंसीडर करते हैं, गवर्नर लिमिट, जैसे यू हैव अ गवर्नर लिमिट के व्हेनेवर वी राइट डाउन अ क्लास, तो द क्लास must not have more than 1 lakh lines of characters, and then and 60,000 what, that was 60,000 lines or something like वो कुछ था ना अपना, यार मैं एकदम दिमाग से स्लिप हो गया। 1 lakh lines, 1 lakh 60 lakhs of characters, 60 lakhs of character and 1 lakh lines, है ना, more than 1 lakh lines। So that governor limit doesn't applies on the test classes।
तो जब भी आप किसी भी क्लास को @is टेस्ट करते हो, अब इसके अंदर आप अगर 1 लाख भी एक 1 लाख लाइन्स ऑफ 2 लाख 5 लाख भी लिख दोगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड, दैट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। वाई? तो वो गवर्नर लिमिट से ये वाला पार्ट स्किप हो जाता है। जो हमारी गवर्नर लिमिट है कि 1 लाख लाइन्स ऑफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 60 लाख जो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उससे ज्यादा कोई प्रोग्राम होना नहीं चाहिए। तो that thing is not applied on the test classes. That thing is not applied on the test classes because test classes का number of lines and then characters, they are being bypassed from the governor limit. तो इसके अंदर अगर even if you write down the 5 lakh lines of the code, if you write down 1 crore characters, then also it's going to be get passed. So test classes are exempted from the governor limit. The number of the lines and the number of the character, everything has been exempted. Governor limit simply doesn't apply on the test classes. That's what. Whenever you make any class, at the beginning itself, if you mention this @is test, you make a class to be a test class, then it is being exempted. It's being exempted from any of the governor limits. That is one thing you need to understand. ऐसा कुछ बातें थी. Okay, so let's write down a test classes. Let's start with this, with the first use case. So first of all, I'll be preparing one of the class. I'll be preparing one of the class. See, here, I would like to take a little bit of the shortcut, but I will be usually doing, I will be going to copy this code of the class. Okay, and then I will invest my time only in writing the test classes. Okay, let me just copy and paste it. It will actually save some of, not some, it will going to save much of my times, and I'll be investing my time just writing in the test class. So if any one of you have a problem with this, just ping it right now. Just ping it. Or is it fine to everybody if I copy this code and paste it? I just copy the code of class and start writing the test classes. Is it fine to everyone? Or should I write down the test classes? Should I write down these classes also? Please tell me, guys. Please tell me. Do anybody have a problem in this? Don't worry, I will be explaining what this class is all about. I will be explaining this. Okay. So there is a class. Thank you so much. Thanks for this prompt reply. See, there's a class to perform certain mathematical operations. The class name is maths operation utility. What we are seeing over here, there is a first method. First method is the name addition. It is accepting 3 integer parameters. Whenever this method is going to be get called, static and void method है, सारी methods static and voids है. So this, whenever this method is going to be get called, it will ask you to enter 3 integers. All those 3 integers will be get captured in the integer x, y, and z, and this method will return the additions result x plus y plus z. Obviously, multiplication will, this is another method which is going to be accept 2 parameters of the type integer, which is going to be collect into x and y. It's going to perform the multiplication x and x multiplied by y. That is what it's going to be get result. It's going to be written that. And void division will perform again. It will accept, it will ask you to write, give the 2 parameters as an integer parameters, gives 2, and then it performs plain division. Modulus is something which is making the use of math class dot mod operator, mod function, not operator, and it will give you the remainder. If this give you the question, this is going to give you the remainder. So this is what the class is all about. Okay, let me write down this. Let me copy and paste it across. Let me create some similar kind of class for that. So I'm going to this new button and I'm creating this maths operation utility class, and then let me copy the code. Let me copy the code. So this is my code. Let me save it. Now for this class, for this class, if I wanted to see how much code coverage is for this class, how much code coverage is for this class, so I could go over here. The name is maths operation utility. Okay, mass operation utility. This class doesn't seems to be have any code coverage. The code coverage right now you could see over here is 0%. It's 0%. So let me try to cover this. There are four different methods over here. 0/4 matlab there are 4 different methods over here. Not lines, there are 4 different methods over here. What are those methods? The methods names are addition, multiplication, division, and modulus. These are the 4 methods, but none of the method has been covered, and so the code coverage is 0%. 0%. Now let me try to make the improvement over here. Try to make the improvement over here. So I'm creating a test classes for that. Okay, I'm creating a test class for that. Okay, I'm creating a test class for that. So what's my usual way? Copy the name of the class. See, there is no separate way to create a test class. You always require to go with this link only.
Although for creating a trigger there is a way, but then for writing the class of every type you need to go with this only. Okay, you need to go with it. Even the batch classes also you need to follow the same thing. For the schedulable class you also need to write down the same thing. Okay, even for the APIs also integration में भी हमको यही लिंक जाना है. वो अलग बात है, हम क्लास को बाद में स्ट्रक्चर्ड आउट कर देते हैं अपने हिसाब से. ठीक है, फॉर द बैच क्लासेस उसको ग्लोबल करते हैं, उसमें बैचेबल इंटरफेस डिमांड कर लेते हैं. ठीक है, स्केड्यूलेबल में सिस्टम डॉट स्केड्यूलेबल डिमांड कर लेते हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो आई एम मेकिंग दिस मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी टेस्ट. ठीक है, आखिरी में टेस्ट लगा दिया मैं. ठीक है, नाउ सी हियर अभी तक ये सिंपल क्लास ही है. अभी तक दिस इज अ प्लेन क्लास. अभी तक ये प्लेन क्लास ही है. नाउ just observe like something is going to be happened over here. Something is going to be happened over here. ठीक है, or rather here something is going to be happened like this complete test. ये यहाँ से यहाँ तक आप ऑब्जर्व करो, ऊपर तो नहीं लेकिन यहाँ पे. As soon as I will be writing at the rate is test, and I'm saving this. Now see what happens. What did you observe? Yes, any one of you? What did you observe? Test button. Sorry? Run test button. Yes, one button appears to become over here, run test button, right? As soon as you make a class as a test class, as soon as you make a class as a test class, there is a button that appears on to right, and what is that? Run test. There is a button that appears, run test, right? So this button only appears for the test classes. If you go with any another class, that doesn't seems to have that button, right? That doesn't have to seems to have that button. Now what I need to do? I need to test this class. This class has 4 different methods: addition, multiplication, division, modulus. In the beginning, I will be giving you some simple examples. So that you could understand how to write down the test classes and everything. But then later on, when we move on, we will be taking the examples of all those classes, not all, at least some of the classes that we have written, the triggers what we have written in the past. But right now, because this is the early stage, you must aware how to write the things and all, because to make that improvement in the test typing, I will be taking a few of the basic examples, and then we will actually see, like for the actual use cases, how to write this down, right? Okay, so for this class, I need to write down the test classes, test coverage. I need to provide the test coverage for this class. The first observation of every software developer: how many methods this class have. I can see there are 4 methods. I can see there are 4 methods inside the class. I can see that there are 4 methods inside the class. Now to provide the coverage, if these are the 4 methods, and to provide the 100% coverage, I need to cover all of them. Let's say 100 divided by 4 is 25%. If I cover this method, if I cover only addition and I don't cover multiplication, division, modulus, how much coverage I am going to provide? 25%. Along with addition and multiplication, if I write down the test cases for these 2 methods, I will be covering 50%. With division, it goes 75%, and with this whole method with the modulus, it will go 100%. So my first attempt would be try to cover all methods. If it is not possible, then you know one thing. Individually, the whole organization coverage should be 75%. The whole organization coverage should be full. But I'll tell you one thing: in the real time, your lead, your manager would ask you at least for 85%. Your manager would ask you at least for the 85%. Why? Because see, test coverage for every method, for every class is not entirely possible. There are few of the logics for which we cannot write down the test cases. There are so many reasons for that. There are so many reasons. When you will be working in the real time, you will be seeing that there are so many different methods for which it is even not possible to write down the test classes, test coverage. So to make up a cope up with that, if I have 2 classes, class 1, class 2, and then if I have class 3 and then class 4. For this class, if I have 100%, for this class, if I have 85%, okay. For this class, if I have, like for example, 75%, but for this class, if I was
by applying all efforts, I'm only getting 60%. I'm only getting 60%. My whole coverage, my whole organization coverage should be minimum 75%. If I wanted to deploy these four classes, if I wanted to deploy these four classes, my overall code coverage should be 75%. So what, so let me show you something. So here I need to find out the average. Here I need to find out the average. Now what's the average? 100 plus 85 plus 75 plus 60. That comes out to be 320. Now that divided by 4 is how much? 80%. That means my overall coverage is 80%. How much minimum I require? 75%. Okay, that's work fine. No problem. That works fine. So in the real time, what happens is like, and there are few of the logics that can, for which we cannot completely provide a test coverage. इसीलिए at least your manager will ask you कि यार कम से कम 85% तो भी लाके दे मेरे को हर क्लास का. If you give this, he will going to give you the treat. But at least if you give this, he will ask you to make an improvement and go up to 85%. तो यूजुअली रियल टाइम पे जितनी भी क्लासेस हम लोग लिखते हैं, जितने भी ट्रिगर्स, तो खैर 1% 2% में चल जाता है. बट द क्लासेस व्हाट वी हैव रिटर्न, उसके लिए 85% डिमांड करते हैं. मैं भी अगर किसी को डिमांड करूंगा तो आई विल आस्क हिम टू मेक द इंप्रूवमेंट अप टू 85% कोड कवरेज दे मेरे को. बिकॉज आई नो देयर कुड बी सम ऑफ द लॉजिक. हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक जरूर रहता है जिसके लिए आप पूरा कोड कवरेज नहीं दे पाते. तो वो, अब ये भी अपना भाई है. अभी 4 लड़के हैं अपने को, तो एक अगर 100% ला रहा है, 85 75, तो इसको थोड़ा ना निकाल सकते, इसको भी लेके चलना है. तो इसीलिए बाकियों का इंप्रूवमेंट जो है, बाकी पे जितना हो सके उतना कवरेज दो, कि एक आधी क्लास अगर नीचे भी जाती है तो एवरेज अपना 75% आ जाने को तो चल जाएगा. ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कोड कवरेज 75%. बट इंडिविजुअल क्लास के लिए जितना हो सके, मिनिमम 85% हर कंपनी मांगती है. ट्राई टू गिव 100%. चलो, ट्राई टू गिव दी 100%. सो मुझे ना 4 मेथड्स नजर आ रही हैं. 4 मेथड्स के लिए मुझे लिखना है. पहली मेथड क्या है मेरी? एडिशन. पहली मेथड क्या है मेरी? एडिशन. ठीक है, एडिशन के लिए लिखूंगा. चलो अब एक एक करके मैं पूरी कवर करता हूँ. तो अब ये क्लास तो मैंने बना ली, टेस्ट क्लास. हर क्लास की अपनी मेथड्स होती है, हर क्लास में मेथड्स होती है. इवन टेस्ट क्लासेस आल्सो हैव द मेथड्स. तो टेस्ट क्लास की जो मेथड होती है, द मेथड शुड ऑलवेज बी स्टैटिक, और उसका एक ही नाम है, टेस्ट मेथड. दूसरा नाम नहीं देंगे. ठीक है, द मेथड नेम इज ऑलवेज टेस्ट मेथड. The method name, the method name, like there is a keyword, for that. There's a keyword for that, and that is test method, and then it must be a void. Now give the method name. ठीक है. तो what I'm checking over here, अब वैसे तो ये इंडिविजुअली एक एक मेथड के लिए बनाया जाता है. बट एक्चुअली इंडिविजुअली एक एक मेथड के लिए, मतलब जब एक्चुअल कोड कवरेज देते हैं तो एक एक मेथड का देते हैं. हैंडल बिफोर इंसर्ट का अलग कवरेज दूंगा मैं. ठीक है, उसके बाद में ये जो मेथड है उसका अलग कवरेज दूंगा. हाँ, मतलब मैंने क्या बनाया था, ट्रिगर है. हाँ, देखो, तो यूजुअली हर एक मेथड का ना अलग अलग कवरेज देते हैं अपन. ये एक मेथड है, उसका अलग कवरेज है. ऑन बिफोर इंसर्ट अपडेट का अलग कवरेज दिया, हैंडल बिफोर इंसर्ट अपडेट का अलग कवरेज दिया. ठीक है, इसका अलग कवरेज दिया, इसका अलग कवरेज. यूजुअली ऐसा दिया जाता है, बट अभी जो है, क्योंकि अपना लॉजिक छोटा है, ठीक है, दोनों तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग वन मेथड. एक ही मेथड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे. उसी मेथड के अंदर ये चारों मेथड्स कवर करूंगा मैं. चारों मेथड्स कवर करूँ. ठीक है, तो टेस्ट, नाउ गिव एनी नेम, मैथ ऑपरेशन, टेस्ट मैथ, MAT मैथ, टेस्ट मैथ ऑपरेशंस, ऐसा कुछ तो नाम दे दो. यूटिलिटी वगैरह देना है तो दे दो. ठीक है, आई क्रिएटेड अ मेथड. कौन सी मेथड? टेस्ट मेथड. तो जब भी आप टेस्ट मेथड बनाते हो, तो टेस्ट मेथड बनाने के अपने कुछ रूल्स है. ठीक है, पहला रूल, टेस्ट मेथड मस्ट बी स्टैटिक. टेस्ट मेथड मस्ट हैव द कीवर्ड टेस्ट मेथड. टेस्ट मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग, सो इट मस्ट बी वॉइड. ठीक है, तो whenever you create a test class and you are writing the test method, अब इसके अंदर आप चाहे जितनी मेथड्स बना लो, इसके अंदर चाहे आप जितनी मेथड्स बना लो, बट दिस शुड बी ऑलवेज योर बेस मेथड. दिस शुड ऑलवेज बी यूनिक. एक क्लास के अंदर 2 मेथड्स आप ऐसी नहीं दे सकते हो, 2 टेस्ट मेथड आप नहीं दे सकते हो. ठीक है,
ठीक है, ये नहीं करना कभी, ये नहीं करना, क्योंकि इसमें कौन सा टेस्ट रन हो रहा है एग्जैक्टली पहला और कौन सा बाद में, वी कैन नॉट डिफाइन, हमें नहीं पता चलता है। इसलिए रादर ऑलवेज मेक वन यूनिक टेस्ट मेथड, और जितनी भी मेथड्स को टेस्ट करना है उसको उसी के अंदर डालो, उसमें अंदर में आप चाहे जितनी मेथड्स बना लो, बट डोंट डू दिस, बट डोंट डू दिस, ठीक है, वरना आपका कंट्रोल नहीं रहेगा टेस्ट के ऊपर, वरना आपका कंट्रोल नहीं रहेगा टेस्ट के ऊपर में, क्योंकि ये कोई ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल थोड़ी ना है कि जिससे हम ट्रिगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनली, किसका इज बिफोर है, इज आफ्टर है, तो उसके लिए अपन कंटेक्स्ट वेरिएबल फायर कर सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमेशा ट्राई टू क्रिएट ओनली वन टेस्ट मेथड, एंड विद इन दैट टेस्ट मेथड क्रिएट एन नंबर ऑफ द मेथड्स, इंटरनल मेथड्स, चाहे आप जितनी भी चाइल्ड कंपोनेंट्स बना लो उसके अंदर, वो चलता है, वो चलता है, ठीक है। नाउ हियर आई विल बी calling the methods, calling the test methods one by one। यहाँ पे मैं सबको एक एक बार एक एक करके कॉल करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वायर टू चेक विच मेथड, मुझे सबसे पहले किसको चेक करना है, एडिशन, एडिशन चेक करना है। एडिशन बिलोंग्स टू विच क्लास, ये क्लास, ठीक है। तो देखो हाउ आई एम कॉलिंग, मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी डॉट, मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी डॉट, फर्स्ट मेथड, कौन सी मेथड है, फर्स्ट मेथड, आई नीड टू कॉल द एडिशन मेथड, एडिशन मेथड में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द रिटर्न टाइप, वॉइड, वॉइड वॉइड वॉइड, ठीक है, सारी मेथड्स आर वॉइड। यहाँ पे मुझे तीन इंटीजर सप्लाई करने हैं, यू नो हियर आई नीड टू परफॉर्म तीन इंटीजर, तो जैसे कि 100, ठीक है, एंड देन जैसे कि 200, एंड देन जैसे कि 300, ठीक है, एंड देन जैसे कि 300, ठीक है। तो आई एम सप्लाइंग दिस डेटा, आई एम सप्लाइंग दिस डेटा, लेट मी सेव दिस कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लेट मी सेव दिस कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, दिस कोड बीइंग सेव। अभी देखो मैंने एक ही मेथड कवर किया है, तो 25% कवरेज मिलना चाहिए इसका मेरे, ठीक है। तो हाउ टू रन दिस टेस्ट, देयर इज अ बटन रन टेस्ट, टेस्ट रन करो, टेस्ट रन सक्सेसफुली, टेस्ट रन हो गया आपका सक्सेसफुली, तो गो टू दैट क्लास, कौन सी क्लास थी अपनी, क्लास नेम वाज मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी, मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी, मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी। देखो एक मेथड कवर हो गई, आपको कितना कवरेज मिल गया, 25%, आउट ऑफ फोर, आउट ऑफ फोर वन मेथड हैज बीन कवर्ड, कितना कवरेज आ रहा है आपको, 25% कवरेज आ रहा है, ठीक है। आप व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिंपली सप्लाइंग, ये वेरिएबल, ये जो अपने यहाँ पे पैरामीटर्स है ना, उनको आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। अब ये चेक करने के लिए कि वो सही हुआ कि नहीं, 100+, ये 600 रिजल्ट आया कि नहीं आया, उसका दूसरा तरीका है सिस्टम डॉट असर्ट, वो मैं कल सिखाने वाला हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप कल बताऊंगा कि जैसे अपन ने ये एडिशन मेथड को ये तीन नंबर दिए, 100, 200 एंड 300, तो उसका रिजल्ट आइडियली 600 आना चाहिए, वो भी चेक करना पड़ता अपने को। फिलहाल वो नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। सबसे पहली टेंडेंसी टेस्ट क्लास बनाने की, सबसे पहली टेंडेंसी टेस्ट क्लास बनाने की, सबसे पहले जाके देखो कितने मेथड्स हैं, कितनी मेथड्स हैं, चार मेथड्स हैं, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करो। पहली मेथड लिया एडिशन, एडिशन को कितने वेरिएबल्स डिमांड कर रहा है, एडिशन मेथड अगर कॉल हो रही कितने पैरामीटर्स है, तीन पैरामीटर्स है, ठीक है, तीनों पैरामीटर के टाइप देख लो, इंटीजर है, ये मेथड को कॉल करो। हमेशा टेस्ट क्लास बना रहे हो ना, सबसे पहले मेथड को कॉल करो, मेथड कॉल हो रही है एडिशन, तो उसके साथ तीन पैरामीटर देने दे दो, दे दो, देने के बाद देखो कि अब ये मेथड आपकी कवर हो गई, उसके बाद में ये मेथड लो, ये अब उसमें इंटरनल क्या है, अगर उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बराबर ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखने का दूसरा तरीका उसमें कल जाएंगे। आज सिंपल रखते हैं, आज बस मेथड्स को कॉल करते हैं, उनको नंबर ऑफ पैरामीटर जो भी चाहिए वो टेस्ट डेटा अपन सप्लाई करते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ मैं ये जो टेस्ट क्लास लिख रहा हूँ, ये गवर्नर लिमिट से फ्री है, इस पे सारे, कोई नाका नहीं लगता इसको, ये गाड़ी अगर चली रोड पे कि इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता, इस पे कोई गवर्नर लिमिट, कोई नाका वाका कुछ अलाउड नहीं है। यहाँ चाहे जितनी नंबर ऑफ लाइंस लिख दो, चाहे जितना नंबर ऑफ डेटा सप्लाई करो, ये गवर्नर लिमिट के परे है। जो आपकी दो मेजर गवर्नर लिमिट है, 1 लाख लाइंस ऑफ द कोड एंड 60 लाख लाइंस ऑफ द कैरेक्टर, उसके सब बाहर है ये। क्यों, बिकॉज दिस इज एट द रेट इज टेस्ट, ठीक है। चलिए सेकंड को कवरेज प्रोवाइड करते हैं, सेकंड कवरेज करते हैं, ये आपकी पहली मेथड होगी। दूसरी मेथड, ठीक है, मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी डॉट डिवीजन, इसको दो इंटीजर चाहिए, तो आई एम सप्लाइंग 10, ठीक है, 10/5, 10/5, दूसरा कवरेज मिलता है मेरे को, ठीक है, दूसरा कवरेज मिलता है। अगर मैं आप जाके रन टेस्ट करूं इंडिविजुअली, अगर करना चाहते हो तो करो, रन टेस्ट करो, रन, अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो जाओ और क्लास का कवरेज देखो, क्लास का कवरेज मैथ्स ऑपरेशन हैपरल 50, देखो यूटिलिटी 50% कवरेज पे आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह से, लेट मी नाउ ट्राई टू गिव मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को भी लेट्स गिव मी 10/3, ठीक है, एंड देन
My last class is multiplication, for example 60 multiplied by 3. ठीक है, now I'm saving this code. ठीक है, just saving the code doesn't run the test. You exceptionally required to run this test by pressing this button. Now I run this test. Now test successful. अगर एरर होंगे तो एरर आ जाते हैं, बिकॉज एरर नहीं है दैट मीन टेस्ट केसेस क्लास बिल्कुल सक्सेसफुल रन हुई है. now if I go to the maths operator utility, it's now having 100% coverage. अब ये क्लास डिप्लॉय हो सकती है. now you can deploy this class from where? Sandbox to production. Sandbox to sandbox, there is no need to have this coverage, but while moving it from sandbox to production, then you require to have the coverage, and now this class can be moved. ठीक है, अभी चलते हैं इधर. अपन ये जो अपना पूरा डब्बा गुलता है यहाँ पे, कोई यहाँ पूरा डब्बा गुलता अपना एस्टिमेट योर ऑर्गेनाइजेशन कोड. ठीक है, तो अभी अभी भी मेरा कोड कवरेज जो है, इट्स करंटली कोड कवरेज 0 ही है, बिकॉज एक ही क्लास मैंने कवर की है. ठीक है, एक ही क्लास कवर की है. तो धीरे धीरे करके ये इंप्रूव हो जाएगा. 2-3 क्लास करूंगा तो 1% 2% पे आ जाएगा ये. इट शुड एटलीस्ट हैव 70% इफ यू आर मेकिंग दिस कंप्लीट क्लासेस टू बी गेट डिप्लॉयड. बट अगर नहीं है, 5 और 6 क्लासेस कर रहे हो, तो वो मिला के 75% होना चाहिए. तो विच क्लास वी हैव कवर्ड? मैथ्स ऑपरेशन यूटिलिटी, दिस इज द क्लास. ठीक है, and the code coverage is what? 100%. All the 4 methods have been covered. All the 4 methods, 4 out of 4, and so the code coverage is 100%. ओके, सो टुडे आई एम स्टॉपिंग इट ओवर हियर. कल थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कुछ नया डालेंगे इसमें. ठीक है, आज हमने कोई मसाले नहीं डाले, कल थोड़ा सा अदरक लहसुन जो भी डालना है थोड़ा बहुत डालेंगे, और ये रेसिपी को थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे कल. ठीक है, आज इसको इतना ही रखते हैं. कीप इट सिंपल. आज इतना ही खाओ तुम लोग.